Hello everyone, and a very warm welcome. My name is Jay Kothari, and I'm the lead investment strategist with DSP Investment Managers, and also the head of international business at DSP. I'm here to kind of speak to you more on gold as an asset class and how does it kind of fare in terms of your diversification journey within all the asset classes you own. So in terms of today's topic and our focus on in terms of gold, both physical and even in terms of investing it through ETFs or gold equity funds, we just wanted to give you a sense in terms of how gold has performed last couple of years, including this year, especially in the background of how COVID is impacting global asset classes, and gold has done exceptionally well. But we also have a different perspective in terms of gold's rally and what to expect going forward, including the volatility and the return expectations going forward. Gold, so that just to make it more meaningful rather than just going into diversification. So I'll just kind of give a background and then come to diversification. Yes. Great. So before we come on to the key question in terms of why gold as a diversifier, one of the most important aspects one needs to keep in mind is that when you look at gold and in what scenario does gold do well, there are a couple of kind of pointers जहां gold अच्छा करता है. So जब volatility market में काफी high होती है या फिर inflation काफी high होता है, so अभी आज के समय में जहां global equity markets, bond markets, अपना equity markets, volatility और inflation का जो फियर होता है वो समय में गोल्ड टेंड्स टू डू वेल. दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जब भी रियल इंटरेस्ट रेट्स नीचे जाते हैं, और रियल इंटरेस्ट रेट्स का मतलब क्या है कि जब भी अपना इंटरेस्ट रेट सिस्टम में और इन्फ्लेशन को बात करने के बाद आपका जो रिटर्न आता है, अगर वो रिटर्न्स अगर नीचे जा रहा है, दैट इज गोइंग टू बी इम्पैक्टिंग kind of return expectations for investors, and at that point in time people look for investing into gold as an asset class. And lastly, in terms of hedge against inflation, so अपने इंडिया में जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं हम इन्फ्लेशन की बात जरूर करते हैं, because that kind of eats away from your returns. So आप जहाँ FD में इन्वेस्ट करते हैं या फिर फिक्स्ड इनकम में करते हैं या इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, so these are the important factors in terms of looking at gold as a diversifier. Now in terms of the other important aspect is that आज अभी last 2 साल से gold has done extremely well, and I'll come to that in a moment कि हमारा fund world gold fund जो काफी लोग अभी उसके बारे में बात कर रहे हैं because it has done well, but I'll come to that in a moment. In terms of why gold prices have done well, a lot of reasons. Number one, gold has done well. It's at a 7-year high because of the COVID issue, which we are seeing right now. It did well last year because of US and China trade issues. It also did well because of geopolitical tensions, whether it's Saudi Arabia or Iran or the US or China. So all these aspects do support gold. और वो समय में जहां दूसरे asset class का return expectations नीचे जाता है, at that point in time gold as an asset class comes up pretty well. And lastly, gold इसलिए भी अच्छा कर रहा है कि because of inflation और because of इतना liquidity जो प्रिंट हुआ है ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स के थ्रू, वो इम्पैक्ट करेगा कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन पे. 1 साल के बाद आ सकता है या 3 साल के बाद आ सकता है, वो कोई नहीं बता सकता, बट जब भी आएगा तभी इन्फ्लेशन अगर ऊपर जाएगा और रियल इंटरेस्ट रेट जब भी नीचे गिरेंगे तभी गोल्ड एज एन एसेट क्लास का जो वैल्यू है वो काफी बढ़ जाएगा, एंड हेंस पीपल आर गोइंग आफ्टर द कमोडिटी. एंड देयरफॉर इवन अ लॉट ऑफ सेंट्रल बैंक्स जो अलग अलग देश हैं, रशिया है, चाइना है, इंडिया है, सब अपने गोल्ड रिजर्व्स भी बढ़ा रहे हैं. इंडिया इतना नहीं, बट चाइना और रशिया काफी हद तक अपने गोल्ड प्राइसेस बढ़ रहे हैं. सो दैट ब्रिंग्स मी टू द मेन क्वेश्चन कि व्हाई invest into gold as a diversification, and why gold as a diversification. Number one point, it is, as I mentioned, it is a hedge against inflation. उसका मतलब क्या है कि हम जब भी inflation का बढ़ाव experience करते हैं तो ऐसे कौन से asset classes है जो उनके against अच्छी तरह से होल्ड अप कर सकते हैं. गोल्ड is one of the asset classes which kind of has a negative so called correlation. Number 2 is INR जब भी depreciate होता है, so हमारा inflation और interest rates के वजह से हमारा INR हर साल depreciate होता है 3 या 4% से. ऐसे समय में गोल्ड का अच्छा होना वो काफी
ऑब्वियस है, बिकॉज हम गोल्ड इंपोर्ट करते हैं, और गोल्ड जब इंपोर्ट होता है और रुपी डेप्रिशिएट होता है, उससे अपना गोल्ड प्राइसेस में बढ़ाव आता है. सो इफ यू आर इन्वेस्टेड इन द गोल्ड in INR terms, you will see an upward move in gold prices. Number 3, वो negative correlation equity के साथ है. So if you look even global indices को आप देखते हैं, जब भी S&P 500 US में बात करते हैं या फिर global index की बात करते हैं, उनके correlation काफी लो है. So if you look at S&P 500 का अगर आप correlation देखें versus even gold और MSCI वर्ल्ड का भी देखें, तो नेगेटिव कोरिलेशन है, नेगेटिव 0.1% का नेगेटिव कोरिलेशन है. सो दीज आर दी aspects why people have been kind of investing into gold, and why diversification is important. And last point is that if you look at exposure to gold from a even point to point return, अभी last 5 साल में आप equity returns देखें या फिर gold returns देखें, gold has outperformed all asset classes. So just to give you a number, gold in INR terms is up 11.4% CAGR over the last 5 years. Equities is up 5% in the last 5 years. 10-year GSEC is up 7% CAGR. Bank FD 6.8%, और Indian treasury bill जो बोलते हैं, वो 12-month treasury bill, वो 6.2%. So clearly, as a diversification, it has done extremely well, and that should continue to be the case at least going forward as a diversifier. So in terms of gold bonds, whether ETFs and physical gold, our recommendation would be that it's not either or. It is you can invest into both in terms of physical and the non-physical aspect of gold. There's a simple reason, is that gold, even a physical ownership of gold in India is pretty kind of eminent. And just to give you a number, India owns approximately 24,000 टन अपने पास है इंडिया में. आपके पास, हमारे पास means each and every individual in India, some form or the other, that is kind of an inelastic demand. हर साल हम अक्षय तृतीया हो या फिर किसी की शादी हो या अपने घर पे किसी की शादी हो, या that is one way to kind of give a gift to your loved ones, and that's the reason why gold is kind of an inelastic demand in India. But in terms of ये कैसे हम hold करें, whether ETF में जाना चाहिए या फिर equities में जाना चाहिए, हमारे हिसाब से दोनों में you can take exposure. वो कौन से proportion में होना चाहिए? I feel that gold as a physical quantity you will already have in some form or the other. आपका जो investment होता है, financial investments, that could definitely, one part of the ownership should be through either gold ETFs and even funds, for a simple reason is that if you look at the beta of gold equities is much higher in the fund rather than the physical gold. So कल जाके अगर आपको financial और operating leverage की जो बात करते हैं, आप equities में क्यों invest करते हैं? So एक classic example होता है कि अगर आप cement या स्टील में काफी तेजी का माहौल आने वाला है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और आपका काफी अच्छा पॉजिटिव आउटलुक है, हम जाके सीमेंट बैग्स या फिर स्टील 1 टन लेके नहीं आते हैं, हम सीमेंट के स्टॉक्स या स्टील के स्टॉक्स बाय करते हैं. इन द सेम लाइट, अगर आप गोल्ड में अगर आपको तेजी लग रही है अगले 2 साल 3 साल 5 साल के लिए, गोल्ड एक्विटीज का एग्जैक्टली सेम पॉइंट है कि आप एक्विटीज में इन्वेस्ट करिए और उसका बेनिफिट होगा इन टर्म्स ऑफ योर upside in terms of operating in financial leverage. दूसरी बात is that in terms of जो नए aspects आते हैं in terms of investing into different geographies. So आपको physical gold में invest करने पे आपको प्राइस अप्रिसिएशन मिलता है जितना गोल्ड ऊपर जाता है, बट स्टॉक में और लेवरेज के कारण वो काफी हद तक ऊपर जा सकता है बिकॉज ऑफ द लेवरेज विच इज देयर विद इन द गोल्ड एक्विटीज. दूसरा इज दैट अगर आप ओवरऑल अपॉर्चुनिटी कंपनीज एडिंग वैल्यू, सो एक्सप्लोरेशन कंपनीज या फिर इंटीग्रेटेड कंपनीज की बात करें तो गोल्ड एक एकदम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट होगा, पर गोल्ड एक्विटीज में आपको काफी बेनिफिट्स मिल सकते हैं, वेदर इट्स थ्रू आईपीओज, नई लिस्टिंग होती है उनका बेनिफिट, प्राइस डिस्कवरी हो सकता है, काफी स्टॉक्स में वैल्यू नजर आती है तो आप ज्यादा वो स्टॉक्स ले सकते हैं जिसमें
अपसाइड काफी हो सकता है. So even this year, for example, while gold is up around 20%, हमारा funds have been up almost 30-35%. In the last 1 year also, gold is up substantially, but our equities, the gold fund, the DSP World Gold Fund is up almost 75-80%. Now, one has to keep in mind कि ये हर बार positive नहीं रहेगा, volatility जरूर आएंगे, but these are few of the aspects we feel that gold, physical and ETF and funds where you can just maybe split your money rather than kind of going all in. Gold as an asset has done exceptionally well, both in dollar terms, in rupee terms, in physical, gold prices per ounce. So it's already reached almost $1,720 an ounce in dollar terms. And even in India, the prices have kind of, reached historical highs. But also on the equity side, we've seen a very, very sharp run up in terms of gold equities. Now, as far as the outlook is concerned in terms of gold prices, we don't think that we are going to predict in terms of whether this becomes 2000 or 2500. Can it become? Yes, there are prospects in terms of gold production is falling at a time when gold demand is going high. So demand, gold का demand ऊपर जा रहा है, whether it's physical demand through central banks, whether it's through ETF buying globally, through the SPDR, which is the largest gold fund, or through even households and individuals who are kind of buying gold and gold equities because they do not know what is the future lying, whether it's because a post-COVID situation कैसा होगा, या inflation आने पे situation कैसा होगा, या the entire Iraq, the Iran and the US issue, or the US or China issue, उसके कारण कोई अभी जो चाइना में हो रहा है in terms of Hong Kong and Taiwan, etc. So whether that leads to war, and any situation which kind of is negative is in an economic sense will be positive for the commodity. So whether it kind of goes up from here is very difficult to tell, but ऐसा मानना is a good assumption that over the next few years gold's trajectory should be on an upward trending one. Coming on to the recent performance, gold prices ने काफी अच्छा move किया है at a time when global growth is falling, economic stability is kind of becoming a question. So ऐसे माहौल में और plus US-China trade war और काफी volatility हमने देखी है, उसके कारण gold prices have done well. But going forward, we want to caution investors कि ऐसे investors ऐसे ये fund में invest उनको करना है जिनका horizon कम से कम 2 से 5 साल का हो, क्योंकि ये एक शॉर्ट साइकिल का प्रोडक्ट नहीं है और ये ऐसा स्ट्रेटजी नहीं है जहां आपका इन्वेस्टमेंट आज हो और आपको रिटर्न एक्सपेक्टेशंस कल का हो या एक्सपेक्टेशंस की 6 महीने में आपका रिटर्न बन जाएगा, ऐसा नहीं है. गोल्ड प्राइसेस हैव डन एक्सेप्शनली वेल. हम रेकमेंड करेंगे कि जो भी अभी इन्वेस्ट कर रहा है वो थोड़ा कॉशन लेके इन्वेस्ट करें. 70% ऑलरेडी द स्टॉक्स आर अप, सो ऐसा हो सकता है कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आए, थोड़ा प्राइसेस नीचे जाए. तो जो हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की बात करते हैं इक्विटीज में, यू कैन यूज द सेम स्ट्रेटजी इन स्ट्रेटजी लाइक दिस. सो आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करते जाएं. दूसरा, आपको ये भी याद रखना है कि ये फंड ऑफ फंड स्ट्रक्चर्स है जिसमें टैक्सेशन आपका मार्जिनल रेट ऑफ टैक्सेशन के हिसाब से होता है. दिस इज नॉट द इक्विटी टैक्सेशन, सो वो भी आपको रखना है. तीसरा रिस्क है कि ये इसमें करेंसी प्ले भी होता है. सो अगर आपका व्यू गोल्ड और गोल्ड इक्विटीज पे सही जाता है कि वो अगर ऊपर 10% है पर आपका करेंसी भी अप्रिशिएट होता है, इंडियन INR अप्रिशिएट बाय 10%, उसमें आपका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा करेंसी पे, बिकॉज करेंसी कन्वर्जन में you will lose out on the returns. So all this put together, what I would say is that invest from a 2 to 5 years standpoint. काफी पैसा बन सकता है because of operating leverage, financial leverage, plus the beta of gold equities to gold, which is more than 1, and history suggests that that has always played out well. So therefore one needs to certainly have 5 to 10% of their asset allocation into commodity investments or alternate investments such as gold and other international equities, which can give you a diversifier. And reason for diversification is nothing but it gives you all apples are not in one basket. So even if one asset class goes down, आपका दूसरा asset class अगर अच्छा करता है उसमें आपको overall फायदा होगा, and hence you should kind of consider investing into
gold as an asset class or even gold equities. And as I mentioned, keep a basket approach rather than only going into one of this asset class. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.